So hello friends. So today we are going to study the method of centrifugation and method of chromatography. So basically this is the last section of our chapter element, compound and mixture, and these both are separating method, physically how we can separate mixture. So these are two methods which we are going to discuss today. So method of centrifugation and the method of chromatography. So now if you see, we have already studied this process which is known as sedimentation. So in sedimentation, if you see, there are insoluble impurities which we have seen, like if you have dissolved chalk, mud or sand. So after some time it gets settle down, वो नीचे बैठ जाते हैं ये पार्टिकल्स, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स रहते हैं इसलिए ये सेटल हो जाते हैं नीचे और आपको ऊपर क्लीन वाटर मिलता है और ये जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज है नीचे आ जाती हैं. इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं. लेकिन अगर ये इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज बहुत ही लाइट है, ये हैवी नहीं है, तो ये प्रोसेस को काफी दिनों और वीक लग सकते हैं इस प्रोसेस को होने में, क्योंकि जो पार्टिकल भी है वो बहुत लाइट है. तो उसमें हम जो प्रोसेस है हमको फास्ट जल्दी उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं. तो ये सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है. ये आप देख रहे हैं मैनुअल सेंट्रीफ्यूगल मशीन है, ये इलेक्ट्रिकल सेंट्रीफ्यूगल मशीन है. इसमें क्या होता है, जो ये पार्टिकल्स हैं, जो लाइट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए हैं, उनको इसके टेस्ट ट्यूब्स में डाला जाता है और इसको फास्ट रोटेट किया जाता है और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पार्टिकल हैवी है वो कोने में एकदम साइड की वॉल्स में सेपरेट होकर चिपक जाता है, क्योंकि बहुत प्रेशर से ये घूम रहा है. तो जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो साइड में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो लाइट पार्टिकल है वो इस तरफ अंदर की तरफ रहता है. तो ये एक तरीका है. आप क्या कीजिए, आप एक अच्छे से इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि आखिर ये सेंट्रीफ्यूगल मेथड ऑफ सेपरेशन काम कैसे होता है. तो आप देखिए इस वीडियो को. Centrifugation is the process of separating substances of different densities from a mixture with the help of a centrifuge. Let us conduct an experiment to see centrifugation. For this we need a handy centrifuge machine, muddy water, mixture of calcium carbonate in water, 4 centrifuge test tubes. Take the sample of muddy water and place the test tubes in the centrifuge machine. Now take the calcium hydroxide mixture in the test tubes and also place them in the centrifuge machine. Rotate the machines fast for few minutes. Stop rotating. Remove the test tubes and observe. We see mud particles and white precipitate have settled in each of the test tubes. This is the process of centrifugation. In a centrifuge, as we rotate, the substances experience centrifugal force away from the center, which forces the materials against the wall of the tube. The amount of centrifugal force experienced by any object depends on its mass and the speed of rotation. The components of a mixture get separated because the denser particles are forced to the bottom while the lighter ones stay at the top. So with an increase in the speed of rotation, even lighter materials can settle down. Centrifugation is used in diagnostic labs for blood and urine tests. It is used in dairies and homes to separate butter from cream. मेथड देखा सेंट्रीफ्यूगेशन का, और सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे काम करता है आइडिया आ गया होगा आपको. ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन है ये भी एक फिजिकल सेपरेशन मेथड है जिसमें हम मिक्सर को सेपरेट कर सकते हैं. इस मेथड को बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी. और इसमें क्या होता है, अगर 2 से ज्यादा सब्सटेंस are dissolved in small proportion in a same solution,
These substances are separated from each other by the means of chromatography. मतलब मैं आपको समझाता हूं, जैसे इंक है, ये ब्लैक इंक ले लीजिए, ये क्या आपको लगता है सिर्फ ब्लैक से ही बना हुआ है? ऐसा नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे डाइज का मिक्सचर है जो आपको फिर इसको ये ब्लैक कलर लेके आता है इसको। लेकिन अभी आप इस टेस्ट कैसे करेंगे कि अरे इसमें और क्या क्या मिक्स था इसमें, तो उस प्रोसेस को क्या क्या इसके अंदर और है इस इंक के अंदर, उसके अंदर वो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज किया जाता है। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। एक पेपर, फिल्टर पेपर लिया जाता है, इंक का एक ड्रॉप उसके ऊपर डाला जाता है और फिर इसको डिप किया जाता है पानी में। लेकिन पानी में इसको एकदम इतना, इसको देखेंगे पानी में एकदम हल्के से डिप किया गया है, मतलब पानी का के लेवल के नीचे इसको डिप किया जाता है, इसके नीचे। हाँ, मतलब इंक पानी, जो इंक है वो पानी के ऊपर है उस, और फिर उसको डिप किया जाता है फिल्टर पेपर को। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से पानी ऊपर आने लगता है, खुद ही कैपिलरी एक्शन होता है, ऊपर जाने लगता है। और जब पानी ऊपर जाने लगता है, जो इंक के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं वो भी अलग अलग सेपरेट होने लग जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, येलो ऊपर आ रहा है। तो इससे हमको पता लगता है इस इंक ऑफ स्पॉट्स में और भी स्मॉल प्रोपोर्शंस में जो डिसॉल्व हुए हैं सॉल्यूशंस, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये फार्मेसी में यूज होता है, फैक्ट्री, साइंटिफिक लेबोरेटरीज में यूज होता है, टू डिटेक्टिंग न्यू इंग्रेडिएंट्स एंड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। आप ये वीडियो देखिए तो आपको और अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा क्रोमेटोग्राफी का। Our topic for today is chromatography. Please take my cup. Please, get me the schedule. Does black ink consist of only black color or any other color as well? Let us find out by the process of paper chromatography. Chromatography is a technique of separating two or more dissolved solids which are present in a solution in very small quantities. Wake up. Wake up. Please come here. Yes. Please, wake him up. Do something. Wake him up. Take a strip of filter paper. Draw a line with a pencil close to the lower edge of the paper. No response. Please, call the dropper. Please, wake him up. Put a small drop of ink on the center of the line. Let it dry for some time. No response. Call Mr. Smart. Please, wake him up. Take a jar containing some water. Put the filter paper in it, such that the drop of ink is just above the water level. No response. After some time, the water starts gradually rising up by capillary action. As the water moves up, it takes the dyes present in the ink along with it. As the water rises up, we see different colors on paper. These are the different dyes present in the ink.
Different dyes have different solubility levels and travel at different speeds as the water rises up. As a result, we see different colored strips at different heights, and the dyes get separated. Hence, paper chromatography is used to separate the different colors in a dye. Ha ha ha!